Evening, guys. How are you all? How are you doing? How's your trading? See here, I really want you to follow me on my Telegram channel where I'm super active since morning. I have given a buy on Cadilla. It made a high of 498. Torrent Pharma made a high of 3169. I think it went further up. And then I have given a buy on Lal Path. Lal Path also gave a beautiful breakout. So Lal Path is here. Lal Path has also given a beautiful breakout, right? So Telegram channel is where I am really giving all the calls early morning, right? And you can join me here to really make good money early morning every day. And along with us, you can also make money. I've given Bajaj Finance to buy above 6870, right? So I'll just show you how Bajaj Finance did. Bajaj Finance went till about uh, here, which is 6971, almost like 100 points Bajaj Finance has given. So this is the kind of research we do. We have given a TCS call as well, right? TCS is looking very good to me. TCS call I had given, it made a good, I gave it about 85, 86, and it had made a high of 100.9. So these were my calls today. But anyway, let's come back. And I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm a SEBI registered research analyst. I'm a chief mentor and founder at Stock Pro and partner with Zerodha Upstocks Fires and Astha Trade. And you can follow me on Twitter, right? You can follow me on YouTube, and you can definitely follow me on Telegram. These are the places where I'm super active, and hope you are making money along with me. If you're making money along with me, please give a thumbs up. And what I'm going to do right away, I'm going to filter some stocks for you for tomorrow, right? So if you're finding my videos creating some value in your life, please give a thumbs up, because I really want to hear from you. And besides that, it'll help YouTube in the algorithm, and it'll bring up the video, it'll suggest the video to others, right? So please write a comment, please give a thumbs up, so that the it can be suggested to others in the YouTube algorithm. So now आज हम बात करेंगे फिर से कुछ स्टॉक्स की कल के लिए, बिकॉज सी आई वाज लुकिंग एट द ऑप्शन चेन. आई थिंक एनएससी इंडिया में अभी कुछ इशू चल रहा है, एंड उसके चलते ऑप्शन चेन अभी अपडेट नहीं हुई है, राइट? यू सी हियर देयर इज जस्ट one side is white, the other side is yellow, and there is no division. I'm 100% sure. Otherwise, you know, market, it's somewhere here. This division should have been here, right? But I'm not considering it because the data is not updated here. OI and OI change and everything is missing. So I'm not talking about the option chain today. And we're going to be discussing, you know, simply the stocks, some of the stocks that I have. Okay, now when I talk about stocks, before that, I would like to talk about the sector, right? Which sector looks to me promising for tomorrow? Like which sector looks to me good for tomorrow? So definitely on my radar, IT is there, right? IT is one sector which is on my radar for tomorrow, right? And why is it so? If you just have a look, IT is inside a channel right now, right? IT is inside a channel right now. This is IT index. If tomorrow, today it has broken, right? If it has broken the channel today with green candle, right? See here. Other day also the channel was broken, but it opened high and came down. Today it has broken the channel from downwards, right? From bottom, it's breaking the channel. That shows the strength of bulls, right? So if index goes above 35119, I'm expecting IT to really give a good return. So some of the stocks that I have on my radar for IT, our first stock is TCS, right? It is looking definitely very good to me, and our buying will initiate right after this space, right? Which is 3530, राइट? हम बाय करेंगे 3530 के ऊपर. आज क्लोजिंग हुई है 3502 के पास.
We will buy above 3530. Our first target will be 3560, and the next target is going to be 3575, and after that 3600. These are going to be our targets for intraday tomorrow. Next IT stock that is on my radar is TechM. TechM, right? Tech Mahindra. That's also looking very, very good to me. Again, the reason is almost similar as I had the reason for the IT. So this is how the IT, you know, this is how the Tech Mahindra is faring, and trend line को आज इसने break किया है, and from the bottom up, right, there is a price rejection from the lower levels. अगर हम इसको shorter time frame में देखते हैं, let's say 30 minutes में जाके देखते हैं, so the first candle, because of the heavily negative sentiments, it opened gap down, and from there it recovered, right? So this, after that, it never came to touch this low, or it even never came as low as to touch it at 1515. So this looks positive to me, but कहाँ पे हमको खरीदारी करनी है इसमें, let me give you that also. हम इसको buy करेंगे आज के हाई के ऊपर, which is 1545 के ऊपर हम buy करेंगे. हमारा पहला टारगेट हमारा रहेगा 1550 का, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1560 का, नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1570 का, राइट? सो 25 पॉइंट्स इसमें मुझे आते हुए दिख रहे हैं फॉर श्योर. ये जगह पे हमको थोड़ा रेजिस्टेंस लग सकता है. तो अभी हम कहाँ पे एंट्री लेंगे? हम 1545 पे लेंगे, 1545 पे हम एंट्री लेंगे, और हमारा टारगेट मिनिमम 25 पॉइंट्स का रहने वाला है, राइट? So that is my second stock. The next stock that I have in the same category is HCL Tech, right? In IT only, I have HCL Tech. Here is HCL Technologies. So this is a very powerful candle. So this candle actually has demolished 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candles kind of engulfed by this one single candle. So where do we enter into it? 1145. इस आज के हाई के ऊपर हमको एंट्री लेनी है, राइट? हमारा टारगेट क्या रहेगा? 1145 रहेगा, फिर उसके बाद 1165 रहेगा, फिर उसके बाद 1175 रहेगा, right? So these, there will be about 30 points target that I'm looking into HCL Tech, right? So these are 3 tech stocks that I have given you: TCS, HCL Tech, and Tech Mahindra. Now there are a few more stocks that are on my radar. One of them is CG Power and Industries, right? This is also an FNO stock. It has shown a beautiful recovery from the lower levels, right? It has shown a beautiful recovery from the lower levels. Just let me have a look here. CG Godrej, CG Power, right? Crompton, right? I hope it's the same. Yes, Crompton Greaves, not that one. This is not CG Power, but Crompton Greaves. So ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसने एक जबरदस्त रिकवरी की है फ्रॉम द लोअर लेवल. लेट्स जस्ट सी विद द शॉर्टर टाइम फ्रेम क्या हो रहा है. बिकॉज ऑफ द हेवी नेगेटिव सेंटिमेंट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, इट हैड अ वेरी रॉक सॉलिड कैंडल, बट जो आज इसने अपनी क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है. इस एक तो इस जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स थे उसके ऊपर दी है, और इवन पास्ट रेजिस्टेंस, पास्ट बैरियर को के आसपास दी है, राइट? ये जो पास्ट बैरियर है इसके आसपास दी है यहाँ पे. तो अब हमको क्या करना है? आज के हाई के ऊपर ही हमको एंट्री लेनी है, और रादर आई वुड से कि हमारी एंट्री बनेगी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में एट 452. 452 पे हमको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है, राइट? सो दैट वाज वन. Then the other stock that I have on my radar is Apollo Hospital. Apollo Hospitals. So this is Apollo Hospital. It has been range bound, but हमको कहाँ पे इसमें एंट्री लेनी है? 5935 के ऊपर लेनी है. 5935 के ऊपर हमको इसमें एंट्री लेनी है. And by looking at it only, you will get to know कि इसमें एक जबरदस्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है. It had पीछे
काफी जबरदस्त मूवमेंट आया था, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर एक बिग मूव आया, फिर अगेन 2 दिन कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कल ये 5935 के ऊपर जाता है, वी विल हैव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो दैट वाज अपोलो हॉस्पिटल। फिर इसके बाद एक स्टॉक जो और अच्छा लग रहा है मुझे, वो है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक स्टॉक, बिकॉज इसने काफी जबरदस्त रिकवरी दी है ना। हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है? जो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है 925, उसके ऊपर हमको इसमें एंट्री लेनी है, उससे पहले हमको इसमें एंट्री नहीं लेनी है, राइट? सो आवर एंट्री इज गोना बी अबव 925, right? So these are my some stocks: TCS, TechM, HCL Tech, Godrej CP, Apollo Hospital, and Crompton Reeves. These are the 6 stocks that I have given you. But before I close, I will just have a look at Nifty along with you people. So this is how Nifty looks, right? This is how Nifty looks. Just have a look at this place, right? यहाँ पे आप मुझे बताइए कि क्या हो रहा था मार्केट में, राइट? प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि क्या ऐसा हो रहा था कि एक बहुत बड़ी गिरावट का संकेत आ रहा था यहाँ से। What was so visible from the price which was telling us that there is a huge selling is coming up, right? Please read the price, read the graph, read and write it in the comment box, because I really want to hear from you, right? Then have a look at it, the 2 lines that I have drawn, right? This was a kind of gap which Nifty had created, right, on 27th August to 30th August. अगर आप देखेंगे तो आज उसी जगह से निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है, राइट? वेरी वेरी क्लियरली निफ्टी ने उसी जगह से सपोर्ट लिया है, राइट? बिकॉज ऑफ हेवी सेंटिमेंट्स इट केम डाउन at this place but defended the gap, right? तो there is one possibility अभी कि हो सकता है निफ्टी इस गैप को क्लोज करने के लिए नीचे आए और ये गैप क्लोज करे और फिर उसके बाद ऊपर जाए, या ये भी हो सकता है कि अभी ना करे, कुछ समय के लिए ऊपर जाए, फिर एक दोबारा टर्न डाउन आएगा और फिर ये गैप क्लोज होगा और उसके बाद ऊपर जाएगी। सो मेरा क्वेश्चन जो आज का था आप लोगों से यही था कि ये क्या हो रहा था इन दिनों में? व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट दिस ग्राफ, दिस पैटर्न, दिस प्राइस एक्शन which could tell us that there is a huge selling, almost like 100,000 points selling is on the cards, right? Tell me what was happening here, right? And though मैंने आपसे कई सारी चीजें पूछी हैं, you have to tell me why this. Second, I want to ask you कि यहाँ पे क्या हो रहा था? What was happening here? यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था कि जिससे हमको कोई एक आइडिया मिलता अगर किसी चीज के बारे में कि यहाँ पे क्या चीज हो रही थी, इन 2 कैंडल्स में क्या हुआ है, राइट? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. एंड सिमिलरली this graph pattern I have told you to identify and write it in the comment box, right? So that you understand in what time frame I have taken. I have taken 1 day time frame, right? And as I told you कि ये gap अभी भी unfilled है, right? But ये यहाँ पे कोई बहुत strong buyer initiate हुआ है, and that is why you see a very strong pullback from this level, right? If the buyer is really strong, this pullback will continue and at least Nifty will recover some more points, come till about another 500-600 points, and then again there may be another fall, right? Or it may tomorrow further go down and come back. Let me just check what's happening internationally so that I can give you a better this thing. So internationally, abhi bhi, European markets are slightly positive, एंड जहाँ तक की बात है निफ्टी इसकी, so European markets are slightly positive, so hopefully market should be positive tomorrow. Let's see how it goes on. So अगर कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलता है, right? Let's say मार्केट यहाँ पे खुलता है अगर 17,160 के ऊपर और फिर या कहीं यहाँ नीचे खुल के और ऊपर चला जाता है, then I'm expecting it to go till about this point. यहाँ तक इसको आना चाहिए, 17,600 तक इसको आना चाहिए. तो देखते हैं. और इसी तरह एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है.
सो बैंक निफ्टी भी अपने कंजेशन जोन में है, मतलब जहां पे पहले बहुत कंजेशन था, बहुत सारी कैंडल्स बन रही थी, बहुत अनसर्टेनिटी थी, उसी जोन से बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है और बाउंस लिया है, राइट? सो दिस कुड बी अ वेरी डिसाइसिव स्पेस एज वेल. सो अगर आप नोटिस करेंगे, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन है, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन है, एक बार यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट? यहाँ पे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, राइट? और यहाँ पे रिजेक्शन है, दिस इज अ रिजेक्शन, राइट? दिस इज अ रिजेक्शन, दिस इज अ रिजेक्शन, दिस इज अ रिजेक्शन, राइट? सो अब इसी जगह से बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है. तो देखते हैं अगर कल बैंक निफ्टी इस बैरियर को क्रॉस करती है, which is 36,325, then I'm expecting some kind of up move, right? So let's keep our fingers crossed. You can follow me on Twitter. You can follow definitely me on the YouTube, and you can go through the videos. You will learn so many things. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. You can just go through each and every video that is given over here. And start from the video number 1 अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो. और रियली लर्न, ये जो वीडियोस हैं ये मेरा एक पूरा कोर्स है जो मैं कभी किया करती थी, तो प्लीज learn it through this, right? And then you can start from the video number 1 and you can keep watching latest videos as they provide you some more information. So because आज ऑप्शन चेन मुझे दिख नहीं रही है ठीक से, हम लोग कल ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, और हो सकेगा तो मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगी ऑप्शन चेन का, right? So guys, I'm expecting you to please like, share and subscribe my channel, and please share my videos with others, right? Because a lot of hard work goes into finding out the stocks and selecting them and then doing the analysis, and I really feel that a lot more people should benefit from it. So with this, I'm signing off. All the best and take care, and see you tomorrow. Tomorrow, be present on my Telegram channel. I will be giving some live trades. All the best. Take care.